Assalamu alaikum, dear students. I start my lesson in the name of Allah Almighty, who is most merciful and beneficent. Dear student, this is class 8. This is class 8 lecture English. Today, English lecture. Today, I teach you a story. The topic of my story is a man is known by the company he keeps. इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है. कंपनी सोहबत. Dear student, in my previous lecture, I have defined you what is the story. Okay, and now I tell you the basic of the story entitled by a man is known by the company he keeps. This story is about a father who is very anxious about his son. His son has engaged in the company of bad boys, so he wants to keep him away from that bad company, of boys. So he adopts a very practical trick. We can say that a demo to teach his son a lesson. What method he adopts and what thing he wants to teach him and what happens. Let's see by reading the story. Dear student, I hope you enjoy this story very much. Let's start. The topic is a man is known by the company he keeps. इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है. Munis had acquired the company of bad boys. Munis is the name of a child who acquired mean इख्तियार करना या अपनाना. द कंपनी सोहबत ऑफ बैड बॉयज बुरे बच्चों की या बुरे लड़कों की. मुनिस ने बुरे लड़कों की सोहबत इख्तियार कर ली थी. हिज पेरेंट्स आस्क्ड हिम मैनी टाइम्स टू गिव अप द बैड कंपनी बट टू नो अवेल. मैनी टाइम्स कई दफ़ा गिव अप तर्क करना छोड़ देना बैड कंपनी बुरी सोहबत को बट नो अवेल बेसूद. उसके वालिदैन ने उसे बुरी सोहबत छोड़ने के लिए बहुत दफ़ा कहा मगर बेसूद. बेसूद मीन बट नो अवेल. बेसूद मीन उसे कोई उसका असर ना हुआ यानी उसने उनकी बात ना मानी. वन डे हिज फादर डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन. वन डे एक दिन हिज फादर उसके बाप ने डिसाइडेड टू टीच हिम फैसला किया उसे सिखाने का एक सबक लेसन. एक दिन उसके बाप ने अपने बेटे को सबक सिखाने का फैसला किया. सबक सिखाने का मतलब किस तरीके से उसे समझाया जाए कि वो उसे समझ आ जाए और वो उस चीज़ को छोड़ दे. डियर स्टूडेंट, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी कीप्स के आदमी अपनी सोहबत से ही पहचाना जाता है. जब उस लड़के ने उन बुरे लड़कों की सोहबत इख्तियार की, when he adopts the bad company of boys, then what will be the result? The result will be very, very dangerous or harmful to him. His parents know that result very well, but the boy is completely ignored his parents and he do not know the result. वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो सकता है. Let's proceed in our lesson. He brought a small basket of fresh apples. वो लेके आया एक छोटी सी टोकरी ऑफ फ्रेश एप्पल्स, ताज़ा सेबों की. यानी वो ताज़ा सेबों की एक टोकरी लेकर आया. देन फिर he asked his son to place a decayed apple in the middle. फिर उसने अपने बेटे को एक डिकेड एप्पल यानी एक खराब सेब, जो गला सड़ा सेब, इन द मिडल दरमियान में रखने का कहा. यानी
फिर इसने अपने बेटे से कहा कि वो गला सड़ा सेब उन सेबों के दरमियान में रख दे। बच्चे यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, टू प्लेस। प्लेस व्हेन इट इज यूज्ड एज नाउन इट मीन्स आ लोकेशन, अ प्लेस एक जगह का नाम या किसी भी इलाके का नाम, तो वो जगह होती है। जब ये एज अ वर्ब आता है टू प्लेस, तो इसका मतलब है किसी जगह पे कोई चीज़ रखना, किसी जगह पे कोई चीज़ लगाना या फिर रखना। तो उसके बाप ने अपने बेटे से कहा कि वो एक गला सड़ा हुआ सेब दरमियान में रख दे। ही सेड टू मुनिस, लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू दीज एप्पल्स। ही सेड टू मुनिस, उसने मुनिस से कहा, लेट अस सी, चलो देखते हैं, व्हाट हैपेंस टू दीज एप्पल्स, कि आप उन सेबों के साथ क्या होता है। मुनिस से कहा उसने, क्या वो देखते हैं इन सेबों के साथ क्या होता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे saw that all the fresh apples had gone rotten because of one decayed apple. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे saw that उन्होंने देखा, all the fresh apples had gone rotten. gone rotten mean खराब हो गए, गल सड़ गए। बिकॉज ऑफ वन डिकेड एप्पल, एक बिकॉज ऑफ की वजह से, वन डिकेड एप्पल एक गले सड़े सेब की वजह से। अगले दिन क्या नतीजा देखा उन्होंने, किस चीज़ का, कि उन्होंने बास्केट में, टोकरी में अच्छे सेबों के साथ दरमियान में एक गला सड़ा हुआ सेब रख दिया। अगले दिन उन्होंने देखा कि सारे ताज़ा सेब तबाह बर्बाद हो गए हैं, यानी कि गोन रोटन, गल सड़ गए हैं। किसकी वजह से, एक सड़े हुए सेब की वजह से, बाकी सारे सेब भी गल सड़ गए थे। देन ही द फादर सेड, माय सन, if you do not leave the company of bad boys, you will become bad like them. Then the father said, फिर उसके बाप ने कहा, मेरे बेटे, इफ़ यू डू नॉट लीव द कंपनी ऑफ बैड बॉयज़, अगर तुम बुरे लोगों की सोबत ना छोड़ोगे, उनकी कंपनी को नहीं छोड़ोगे, यू विल बिकम बैड लाइक देम, तो तुम भी उनकी तरह ही बुरे बन जाओगे। यानी अगर तुम बुरे दोस्तों के साथ रहोगे तो तुम भी बुरे बन जाओगे, उनकी आदत का असर तुम पे होगा और वो भी उन्हीं हैबिट्स को अडॉप्ट करेगा और वो भी बुरा बन जाएगा। The advice left a deep effect on the young brain. The advice नसीहत left छोड़ा a deep effect गहरा असर on the young brain उसके नौजवान बेटे पर। तो इस नसीहत का कच्चे जहन पर गहरा असर पड़ा। यंग ब्रेन कच्चे जहन पर या उस नौजवान के दिमाग पर गहरा असर पड़ा। सून, जल्द ही गेव अप द कंपनी ऑफ बैड बॉयज। सून, जल्द ही, गेव अप तर्क कर दी, छोड़ दी, कंपनी सोहबत ऑफ बैड बॉयज बुरे लड़कों की। तो उस बच्चे ने या रिमोनिस ने जल्द ही बुरे लड़कों की कंपनी को छोड़ दिया। मोरल, as every story has a moral, similarly this story also has a moral lesson for all of you. This lesson is extracted from the story. मोरल लेसन हमेशा एक कहानी को बयान करने के बाद उसके हालात और नताइज से जो नतीजा अक्स किया जाता है उसे बयान करना हमारा मोरल होता है, ये इखलाकी सबक होता है जिसे अपना कर हम खुद भी अच्छे बच्चे बन सकते हैं। Dear student, what is the moral of our story? A man is known by the company he keeps. एक बच्चा या हर इंसान अपनी ही सोहबत से पहचाना जाता है। This story has two lessons. First lesson is a man is known by the company he keeps, कि आदमी अपनी सोहबत से ही पहचाना जाता है। The second lesson is avoid the bad company. Avoid the bad company यानी बुरी सोहबत से बचें और अच्छी सोहबत को अपनाएं। Dear student, as I have told you that you will enjoy this story, I hope you all enjoyed this story
very much. Dear student, do you have a look in the result of bad company? I'm sure you know the result of bad company now. So always be a good person, a good student, good human being, and act upon their parents' good pieces of advice, because they are your well wisher, and they want you all students, they want their children are good person, are good human beings, and they are experienced fellows. So act upon the advices, good pieces of advice of your parents. Now note down your diary. It's time to note down the diary. Our diary, learn and write the story on your notebook. अपनी नोटबुक पे स्टोरी लिखें और याद करें. Dear student, it's time to say you thank you for watching this video lecture. See you later with another new lesson. Till then, Allah Hafiz.